Assalamu alaikum, bachcho. So today we are going to do a very uh, old man with enormous wings, a tale for children. Okay. Now the title of this uh, story is very ironic because the plot or the story might seem to be uh, having a childish theme, that is there is a very old man who looks like an angel, who is who falls on on some place which is near the there near the sea. कोई वहीं पे जगह है समंदर के करीब, वहां पे वो गिर के, and how people are reacting to it, that is you know that is the theme of the story. However, the irony of the topic lies in the fact that uh, actually this story is not for children. It is actually for adults to understand. ठीक है, इन अ वे, और ये कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगी कैसे ये एडल्ट्स के लिए स्टोरी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, as the title suggests, that the protagonist of the play, of the story, is this very old man with enormous wings. ठीक है, इसके बहुत बड़े बड़े विंग्स हैं, और हमें पता भी चलता है कि वो ओल्ड मैन है। वो कैसे पता चलता है, ये अब हम स्टोरी के दौरान करेंगे। ठीक है, the writer of this story is Gabriel Garcia. Garcia नहीं आपने पढ़ना, Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez. ठीक है, so, he is ये थोड़ा different आपको नाम लगेगा because he's a Colombian novelist, he's a writer, he's a short story writer, he's a critic as well, and he belongs to that part of the world which where um, Colombia जैसे वो two words था by Isabel Allende. इसी तरीके से this story is also a specimen of magical realism, because सबसे बड़ी तो एग्जांपल ये है कि आपको you won't find in the ordinary world, you would not find a juxtaposition of natural and supernatural, जैसे कोई आपको इंसान और ये फरिश्ते इकट्ठे नहीं नजर आते, यू वुड नेवर फाइंड दैट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपको नजर आते हैं, तो ये आपका मैजिकल रियलिज्म की एग्जांपल है। सेकेंडली, आपको और बहुत सी एग्जांपल्स इसमें मिलेंगी मैजिकल रियलिज्म की, लेकिन वो आप साथ साथ टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। So let's start. Now, the first paragraph is the exposition. It includes the exposition part, and this part is basically telling you about not only the angel, but about the setting as well. So here the setting is also important. Now, keep one thing in mind, that the setting is an unknown place. It's not something confirmed. They have not named this place. This is basically an unnamed place. And why that makes the setting important? Because such situations are occurring in uh, many places in the world. आप इसको generalize भी कर सकते हैं. Specifically, it is the place where Pelayo lives. Pelayo is the that you know the husband, and the wife is Elisenda. ठीक है, वो वाइफ है। दे आर अ young married couple, ठीक है, who have just had their first child, और ये उसी दिन की बात है, जैसे 2-3 दिन का बच्चा है। तो
तब से ये स्टोरी सारी उसी से रिलेटेड है. On the third day of rain, they had killed so many crabs. Now it had been raining for the past 3 days. Okay, which uh, which is not a very normal thing. ठीक है, तीन तीन दिन मुसलसल बारिशें नहीं हो सकती. They had killed so many crabs. There were so many crabs in the house that Pelayo had to cross his drenched the whole wet courtyard. Courtyard Sehen ko कहते हैं, and throw them into the sea. There were so many crabs that were entering their house that Pelayo had to pick all of them up and he had to throw them into the sea because the newborn child had a temperature all night and they thought it was due to the stench. And because of why did they why did he throw the crabs into the sea? Because they were smelly, they had a stench, एक बहुत बड़ी foul smell थी. ठीक है, and which made them they thought that this newborn child is basically getting ill. He has fever because of the उस देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने वर्ड फीवर नहीं यूज किया, टेम्परेचर यूज किया, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं. टेम्परेचर तो हर एक का होता है, टेम्परेचर तो आपका मेरा भी टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे उसने जो वर्ड यूज किया है वो इसलिए टू शो द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, कि जी किसी का बुखार है तो अ, वो मतलब इस वजह से है कि स्मेल आ रही है. ठीक है, हाउएवर दिस इज पॉसिबल. अगर स्मेल के साथ कोई इन्फेक्शन हो, कोई जर्म्स हो, तो ये भी पॉसिबल है. लेकिन फिर भी ऐसा रेयरली होता है कि जब आपने ये स्मेल ये आपकी स्मेल की वजह से बुखार हो जाए. ठीक है, सो दिस शोज देयर इग्नोरेंस. The world had been sad since Tuesday. It seemed that the whole world was sad. Now, you cannot make general statements that the whole world is sad. लेकिन यहाँ पे उन्होंने की है. Sea and sky were a single ash gray thing. They were, it seemed as if they were the color of ash. ये जो राख होती है उसका color. And the sands of the beach, and they were as grey as the sands of the beach, which on March nights glimmered, shined, or glowed like powdered light had become a stew of mud and rotten shellfish. It seemed as if ये stew होती है, एक dish, soup टाइप डिश होती है. तो वो कहते हैं कि इसमें जो मार्च नाइट्स में लाइट की वजह से लग रहा था कि जैसे वो जो एक स्टू पक रहा है, एक डिश पक रही है मड की और शेलफिश की. शेलफिश सारी उन सी क्रीचर्स को कहते हैं या एक्वेटिक क्रीचर्स को कहते हैं जो जिनके ऊपर शेल होती है. ठीक है, it was hard sorry, he had to go very close to see that it was an old man. Then he sorry, the light was so weak at noon because it had been raining throughout and the sky had been covered by the clouds. Pelayo was even at night, at noon, it seemed as if it is night. ठीक है, पूरा वो ग्रे सा scene हुआ है. That when Pelayo was coming back to the house after throwing away the crabs, it was hard for him to see what it was that was moving and groaning in the. Groaning is a cry of pain in the rear back of the courtyard. It was very difficult for Pelayo to understand what was moving, though he noticed the presence of someone. However, he did not, no, he couldn't identify who that person or that thing was. He had to go very close to see. Finally, he discovers an old man, a very old man lying face down in the mud. ठीक है? He was lying face down in the mud. He was, he was lying upside down, who, in spite of his tremendous, huge efforts, couldn't get up, impeded, stopped by his enormous wings. He was, he wanted to get up,
but he couldn't because of the weight of the enormous wings, of the weight of the huge wings. Now, girls, because I'm sitting in my car, you might find some disturbance because of the this rehearsal of 23rd March, but still, ठीक है, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें. So here we, in the exposition, we are introduced to the setting. We are introduced to this person, Pelayo. We are also introduced to the to this, you know, very old man with enormous wings. Frightened by that nightmare, now the conflict starts. How does he react to that when he notices that it is an old man who couldn't fly because that old man who had huge wings? Frightened by that nightmare, he thought that this is a nightmare. How can an ordinary man have have wings, and such huge wings, which did not seem to be wings of a bird. They seem to be huge wings, जैसे बहुत बड़े कोई wings है. Pelayo ran to get Alessandra, his wife. So because he was frightened, therefore he called his wife Alessandra to come towards him and see the these this scene. His wife, who was putting compresses on the sick child. Compresses are वो जो गीली पट्टी लगाते ताकि बुखार उतर जाए. And he took her to the rear of the courtyard. He brought his wife to the backside of the courtyard. They both looked at the fallen body with a mute stupor. When they reached that place, both of them became silent, and they were in a sort of a stupor. They were in a sort of like they were semi conscious. ठीक है, stupor कहते हैं जब आप तकरीबन unconscious हो. So they were semi conscious. They did not know how to react to this. He was dressed in like a rag picker. Rag picker कहते हैं a person who collects rags या रद्दी जैसे इकट्ठे करना, और वो बेचता है अपनी सर्वाइवल के लिए. ठीक है, तो बिल्कुल उसकी हालत पुअर एक रैग पिकर की तरह थी. There were only a few faded hairs. He had very little hair on his head, and they were also faded. That is, they were almost disappearing. Gray, whitish सा उनका color था. On his bald skull, but he was bald. uh, uh, almost bald, थोड़े थोड़े बाल थे, and very few teeth in his mouth. और उसके जो mouth था उसमें तो teeth उससे बहुत ही कम थे. And his pitiful condition of a drenched, wet great grandfather took away and sense of grandeur he might have had. He though because of his age, maybe people would have been giving him some respect, but they were not, because because he was in a very pathetic condition. ठीक है, अगर कोई बेचारा बूढ़ा हो और उसकी हालत भी बुरी हो, तो आप ऑटोमेटिकली उससे थोड़ा घबराते कि ये ना वो हेल्प मांग ले. ठीक है, the same thing happened over here. His huge buzzard wings are hawk like a hawk, dirty and half plucked, were forever entangled in the mud. They were all stuck in the mud. They looked at him so long and so closely that Pelayo and Elisenda very soon overcame their surprise and in the end found him familiar. So they looked at him so uh, attentively that it seemed that he is a normal human being, but the only extraordinary thing about him is his wings. अच्छा जी. So they did not consider him anyone out of this world. So then they dared speak to him, and finally they spoke to him, and he answered in an incomprehensible, uh, something that you do not understand. Dialect is a language
So with a strong sailor's voice. The ironic thing was that though he was all drenched, though he was all weak, though he was old, yet he had a voice of a sailor. He seemed to be a mature person, a person with experience. That was how they skipped over the inconvenience of the wings and quite intelligently concluded that he was a lonely castaway, discarded person from some foreign ship wrecked by the storm because he had a voice of the sailor. So they thought that he is an old man who has been discarded. He's an old sailor who was discarded by his group. कि बीमार है तो वो sailors ऐसे sailors को उतार देते. And yet they called in a neighbor woman. Still नंबर वन, अब ये उसकी ऑडियंस आना शुरू हो गई है. सबसे पहले देखा इसने पिलायो ने, then he called Elisende. Now both of them collectively started to gather people. सबसे पहले उन्होंने एक औरत को बुलाया. इधर मैन भी हो सकता था, but understanding that understanding that mentality of women, that they cannot keep themselves silent. वो जाहिर है बात वो फैलाएंगी. तो नेबर वुमन को बुलाया who knew everything about life and death to see him. So they called the neighbor woman. जैसे हम घरेलू टोटके करते हैं, हाउसवाइफ से वो क्या कहते हैं, हाउसवाइफ की जो मिथ्स होती हैं, जैसे बनी होती हैं कि जी ये करोगे तो ये हो जाएगा, अगर किसी को शाम को बुखार हो जाता है तो उसके साए के ऊपर छुरी मारो. सो दीज आर सुपरस्टिशंस. तो उसका बुखार उतर जाएगा. इसी तरीके से अगर कोई बंदा डरता है तो कोई बच्चा डरता है तो बजाय इसके कि उसको करे, उस पे आयतल कुर्सी पे वो कहते हैं इसकी उसकी पिलो के नीचे छुरी रख दो तो बच्चा नहीं डरता. तो ये तो सब मिथ्स. तो इसी तरह इन्होंने एक खातून को बुलाया हु न्यू एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता था. Typical rural mentality. ठीक है? And all she needed was one look to show them their mistake. And she, as soon as she came, she told them that they are wrong. It's not an ordinary man. ठीक है? He's an angel, she told them. ये तो angel है. He must have been coming for the child. वो तो आ रहा था आपके बच्चे के लिए, उसकी जान लेने के लिए. But the poor fellow is so old that the rain knocked him down. अगर वो एंजल था तो वो क्या उसके लिए रेन मैटर करती? तो वो कहते कि ये ओल्ड मैन, क्योंकि ये ओल्ड मैन है, ये ओल्ड एंजल है, ये आया तो बच्चे के लिए था, लेकिन रेन क्योंकि मुसलसल हो रही है, इस वजह से इसने ये बच्चे को छोड़ दिया है और वो खुद बेचारा कमजोरी से पड़ गया. On the following day, everyone knew that a flesh and blood angel was held captive. He was captured in Pelayo's house. फिर सबको बात पता चल गई. जाहिर है उन खातून ने सबको बता दिया कि जी पेलायो के घर में एंजल है. So everyone came to started coming to their place to see him. Against the judgment of the wise neighbor woman, for whom angels in those times were the fugitive. A fugitive means captured. Survivors of a spiritual conspiracy. कि angels और कुछ भी नहीं है, बस ये कि कोई conspiracy, कोई मतलब ऊपर खुदा की जमीन पे हो रही है, कोई खुदा की दुनिया में हो रही है, जिसकी वजह से एंजल्स को वहां पे कैद किया जाता है और अब वो आजाद, मतलब जो भाग जाते हैं. दे डिड नॉट हैव द हार्ट टू क्लब हिम टू डेथ. और इन्होंने दिल तो इनका ये था कि किसी तरीके से इससे जान छुड़वा ली जाए, लेकिन उन्होंने उसको शुक्र है मारा नहीं, उसको कत्ल नहीं किया. पेलायो वॉच्ड ओवर हिम ऑल आफ्टरनून फ्रॉम द किचन. और पेलायो ने पूरे सारे आफ्टरनून में उन्हें किचन से देखता रहा, आर्म्ड विद हिज बेलिफ्स क्लब. लेकिन साथ ही उसने ना, बेलिफ कहते हैं जो पुलिस ऑफिसर का असिस्टेंट होता है, ठीक है, और या फिर जज का असिस्टेंट होता है, ठीक है.
तो उसने वो पकड़ी एक हैमर अपने हाथ में रखी, ठीक है, कि अगर ये कोई खतरनाक काम करे तो मैं इसके सर में मार के इसको बेहोश कर दूंगा. एंड बिफोर गोइंग टू बेड ही dragged him out of the mud and locked him up with the hens in the wire chicken coop, because everyone has that fear of the unknown कि ये जी कोई अजीब बात है. हम तो अनदेखे से भी डरते हैं, तो इन्होंने तो देख लिया था एंजल, तो इसने कहा कि अगर इसके कोई मशकूक कज़ायम हुए तो बेहतर ये है कि मैं उसको चिकन के साथ ढक देता हूँ. ठीक है. सो उसे वो केज में बंद कर देता है. इन द मिडल ऑफ द नाइट व्हेन द रेन स्टॉप्ड, पिलायो एंड एलिसेंडे वर स्टिल किलिंग क्रैब्स. और बजाय सोने के पूरा दिन वो क्रैब्स को पूरी रात यानी क्रैब्स को मारने में गुजारते रहे. A short time afterward, the child woke up without a fever and with a desire to eat. और इंटरेस्टिंगली ये कि न्यूबॉर्न चाइल्ड को अचानक भूख लगी. ठीक है, बुखार भी उतर गया और भूख भी लगी. ठीक है. Then they felt magnanimous and big, proud, and decided to put the angel on a raft with fresh water and provisions for 3 days and leave him to his fate on the high seas. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि देखो, हमने एंजल का क्योंकि ख्याल किया है, उसे चिकन कूप में बंद कर दिया है, तो बेहतर ये है कि हम ऐसा करते हैं, इसको करते हैं ये इसको सारा फूड दे के 3 दिन का, और इसे राफ्ट इट्स अ वुडन बोट उस पे डाल देते हैं. ठीक है. विदाउट और उसके बाद वो सी के रहमो करम पे जिधर मर्जी जाए. विदाउट द स्लाइटेस्ट रेवरेंस, विदाउट एनी रिस्पेक्ट, टॉसिंग हिम थिंग्स टू ईट थ्रू द ओपनिंग्स इन द वायर. और उन्होंने उसको खाना भी देना शुरू कर दिया. एक मिनट. Sorry, but when they went out into the courtyard with the first light of dawn, जब वो सुबह सवेरे फजर के टाइम हुआ, they found the whole neighborhood in front of the chicken coop having fun with the angel without the slightest reverence. और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग जो हैं वो इसके साथ मजाक कर रहे हैं. Tossing him things to eat through the openings in the wire as if were it weren't a supernatural creature but a circus animal. ये सारा ग्रुप इकट्ठा हो गया, मतलब ये कि जो सारे मॉब, इसमें वर्ड यूज हुआ है, एक पूरा मॉब इकट्ठा हो गया इनको देखने के लिए. और बजाय इसके कि उसको ट्रीट करते एज एन एंजल, दे स्टार्टेड टू ट्रीट हिम एज अ सर्कस एनिमल, एज अ थिंग ऑफ अम्यूजमेंट. अच्छा, अब आते हैं फादर गोंजागो. ठीक है. फादर गोंजागो इज अ पैरिश प्रीस्ट. ओके, विलेज का प्रीस्ट है. अराइव्ड बिफोर 7 o'clock, और तो और वो भी उठ के आ गए. अलार्म्ड एट द स्ट्रेंज न्यूज, ही वाज डिस्टर्ब्ड एट द स्ट्रेंज न्यूज. बाय दैट टाइम ऑनलुकर्स, और उस वक्त तक काफी ऑनलुकर्स लोग देखने के लिए जो लेस फ्रिवलस देन दोज एट dawn had already arrived, and they were making all kinds of conjectures. Conjectures are guesses concerning the captive's future. उन्होंने आके ना गैस करना शुरू कर दिया कि अब इसके साथ होना क्या चाहिए. The simplest among them thought he should be named mayor of the world. जो उनमें से सबसे सिंपल था, जो उनके मतलब ऐसा बंदा जो मतलब बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, उसने कहा कि बेहतर ये है कि हम इसको मेयर ऑफ द वर्ल्ड बना दें. इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दें. टिपिकल हमारी जो मेंटालिटी होती है कि कोई भी ऐसी जरा डिफरेंट चीज हो तो हम फिर उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं. ठीक है. ओके. नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज. जरा एक मिनट रुके. ये सेकंड पेज आ गया. ठीक है. आई होप यू कैन ऑल सी दिस. अच्छा जी. Others of sterner, जरा जो स्ट्रिक्ट लोग थे, mind felt
that he should be promoted to the rank of 5-star general in order to win all wars. क्योंकि ये strange है, एक strange event हुआ है, तो इसको 5-star general बना देना चाहिए, ताकि क्योंकि ये strange चीज है और ये हमारे as a sign of good luck हमें इसको रख लेना चाहिए सारी wars को जीतने के लिए. Some visionaries, यहाँ पे आम लोगों को विजनरी कह रहे हैं. विजनरीज मीन्स जो फ्यूचर का सोचते हैं. प्लानर्स होप दैट ही कुड बी पुट टू स्टड. स्टड इज टू डेकोरेट, ठीक है, in order to implant the race the earth with a race of winged wise men who could take charge of the universe. तो इनको ना डेकोरेट कर देना चाहिए, किसी मिट्टी में लगा देना चाहिए, ताकि इनको इस जैसे और लोग, जैसे प्लांट भी आप लगा देते, तो उस किस्म के और लोग यहाँ पे भी पैदा हो जाए. ठीक है. अच्छा. But Father Gonzago, before becoming a priest, had been a robust, very active woodcutter. वो woodcutter थे. Standing by the wire, he reviewed his catechism. Sorry, catechism. Catechism is means a summary of principles. मतलब ये जो सारे rules of Christianity हैं या principles of Christianity हैं, in an instant, and asked them to open the door so that he could take a close look at that pitiful man who looked more like a huge decrepit hen. Decrepit is dismantled in a very poor condition among the fascinated fascinated chickens. तो बाकी तो chickens normal थे, लेकिन ये बहुत ही एक बड़ी सी chicken लग रही थी, जो कि बिल्कुल ही जिसकी कोई वो नहीं थी, क्या कहते हैं, हालत नहीं थी, जो बहुत बुरी हालत में था. अच्छा जी. So he was lying in the corner, drying his open wings in the sunlight among the fruit peels and breakfast leftovers that the early risers had thrown him. When he entered that coop, Father Gonzago entered that coop, he found that this old man was he was sitting in the corner, और वो अपने विंग्स को ड्राई कर रहा था. ठीक है. और उसके इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ था कि फ्रूट पील्स पड़ी थी और ब्रेकफास्ट के बचे खुचे टुकड़े पड़े हुए थे, जो लोगों ने इसको फेंके थे. एलियन टू स्ट्रेंज टू द impertinence is rudeness of the world, he only lifted his antiquarian is very antique eyes and whispered something in his dialect when Father Gonzago went into the chicken coop and said good morning to him in Latin. तो जैसे हम अरबी में किसी को ग्रीट कर ले मरहबा करके, तो ये बिल्कुल ही उन्होंने अपनी जो लैटिन लैंग्वेज को यूज किया, ताकि लोगों ये इस मे बी ये जो फादर है, एंजल है, इसको इसकी बात समझ में आ जाए. The parish priest had his first suspicion is doubt of an impostor. Imposter means a person who dodges. When he saw that he did not understand the language of God and know how to greet his ministers, तो वो parish priest को लगा कि ये शायद धोखा दे रहा है, ये भेस बदला हुआ है, और ये कोई जिसको यानी लैटिन गॉड की लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही. ठीक है. Then he noticed that scene close up, he was much too human. फिर उसने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही ह्यूमन है. He had an unbearable smell of the outdoors. लेकिन उसकी स्मेल बहुत ज्यादा है जो बाहर आती है. The backside of his wings was spread with parasites, and his main feathers had been mistreated by terrestrial winds. Terrestrial is the strong winds, okay, and nothing about him measured up the proud dignity of angels. तो वो कहते हैं इतना ये इसमें अगर एंजल होता तो इसमें से स्मेल तो नहीं आनी थी, ये तो इसके अंदर से स्मेल आ रही है. Then he came out of the chicken coop and in a brief sermon was जो उर्दू वाला वाज होता है, warned the curious against the risks of being ingenuous. Maybe he is a fake person. He reminded them that the devil had the bad habit of making use of carnival enjoyment for enjoyment tricks
in order to confuse the unwary. सो वो कहते हैं कि हो सकता है ये डेविल, ये एंजल ना हो, डेविल ने एक ट्रिक भेजा हो उनके लिए जो इग्नोरेंट है. अनवेरी मीन्स नॉट कॉन्शियस, इग्नोरेंट. He argued that if wings were not the essential element in determining the difference between a hawk and an airplane, they were even less so in the recognition of angels. कि जब आपके वो कहते हैं कि जब एक हॉक को, एक शाहीन को और एरोप्लेन दोनों के पास विंग्स होते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि एंजल्स के पास भी ये एंजल है क्योंकि इसके पास विंग्स है? वो तो कोई हो सकता है जानवर हो. Nevertheless, he promised to write a letter to his bishop. तो उसने कहा कि मैं अब लेटर लिखूंगा बिशप को, so that the latter would write his primate. Primate is senior, so that the latter would write to the supreme pontiff in order to get the final verdict from the highest courts. तो ये पिक्चर में आपको शायद थोड़ा नजर भी आ रहा होगा. FG स्टैंड्स फॉर फादर गुंजागो ने कहा कि जी मैं बिशप को लेटर भेजता हूँ कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और वो फिर आगे अपने प्राइमेट को भेजेगा, और वो फिर अपने सुप्रीम पॉन्टिफ मतलब पोप को भेजेगा, जो कि हाईएस्ट कोर्ट से मतलब पोप से भी जो सीनियर है उनसे मशवरा लेगा कि जी ये कैसे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए. अब इतना इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया प्रोसीजर. अब आप देखें ये जो मुझे इतने प्लस और ये एरोज बनाने पड़े वो इसी समझने के लिए ये किस किस को लेटर. तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दें कि मैं उसको लेटर लिखूंगा कि वो आगे लेटर लिखे और वो आगे लेटर लिखे. 6 स्टेजेस में, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 स्टेजेस में ये लेटर. फिर वो 5 स्टेजेस में वापस आएगा, तो फिर तब तक तो पता नहीं एंजल रहेगा भी या नहीं. His prudence, his intelligence fell on sterile hearts. ये वैसे स्टेराइल एम्प्टी स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोग थे. उन्होंने कहा कि जी पता नहीं बोलता रहे जिस मर्जी को लेटर लिखे. द न्यूज ऑफ द कैप्टिव, अच्छा ये उसका कॉन्सेप्ट है कि ये स्टेराइल हार्ट्स है. द न्यूज ऑफ द कैप्टिव एंजल, कैप्चर्ड एंजल, spread with such rapidity, speed, that after a few hours the courtyard had the bustle of a marketplace, had the rush of a marketplace, and they had to call in troops with army bulani padgi with fixed bayonets. Bayonets are rifles which have blade in the front, to disperse the mob that was about to knock the house down. इतने वो जोर से नहीं मतलब स्पीड से ये खबर फैली, इतनी एक्सेलरेट हुई कि ये जो सारी तरफ से लोगों ने आके देखना शुरू कर दिया. और लिटरली इतना मॉब था कि ये ऐसे लगा जैसे घर ही इनका गिर जाएगा. Alessandra, her spine, her backbone, all twisted from sweeping up so much marketplace trash, then got the idea of fencing the yard and charging 5 cents admission to see the angel. अब हुआ क्या कि सब ने ना क्योंकि आना शुरू कर दिया, तो इसने कहा कि बेहतर यह कि हम अपने कोर्टयार्ड को फेंस कर देते हैं, उस पे सहन पे बाड़ लगा देते हैं, और जो भी अंदर आएगा वो 5 सेंट्स देगा. ठीक है. द क्यूरियस केम फ्रॉम फार अवे, और ऑब्वियसली फिर लोगों ने, जो क्यूरियस क्राउड्स थे वो फिर भी आए. अ ट्रैवलिंग कार्निवल. ठीक है. अब ये फिफ्थ है जो मतलब पहले आई वो नेबर वुमन, फिर आया एक क्राउड आया, फिर फादर गोंजागो आया, फिर मॉब आया. अब ये ट्रैवलिंग कार्निवल अराइव्ड विद द फ्लाइंग एक्रोबैट, अ पर्सन हु डज ट्रिक्स, who buzzed over the crowd several times. ठीक है. एक कार्निवल आया जो ट्रेवलिंग सर्कस था, और वो क्राउड के ऊपर से उड़ के गुजरता था, लेकिन लोगों ने उसको अटेंशन नहीं दी. बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू हिम बिकॉज हिज विंग्स वर नॉट दोज ऑफ एन एंजल. लेकिन उसको किसी ने भी अटेंशन नहीं दी क्योंकि उसके एंजल्स तो नेचुरल थे ही नहीं, और वो तो लग भी नहीं रहा था कि वो एंजल हो, but rather those of a sidereal bat. Sidereal means distant, far away. Basically, it's related to the stars. The most unfortunate invalids, astaghfirullah, unfortunate is unlucky. Invalids are those people uh, who have a disability. ठीक है. तो ये ट्रैवलिंग कार्निवल असल में क्या था, इसमें जो दुनिया जहान के
कोई डिसेबिलिटी वाले, कोई स्पेशल लोग वो थे। ऑन अर्थ केम इन सर्च ऑफ हेल्थ। वो इधर आए कि एंजल को हम देखेंगे और फिर ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। A poor woman who since childhood has been counting her heartbeats and had run out of numbers। अच्छा, अब क्या क्या डिसेबिलिटीज हैं कि एक वो गरीब औरत थी जिसने जो अपने अपने दिल की धड़कन काउंट करती जा रही थी जब से पैदा हुई है, या जब से मतलब चाइल्डहुड से, बचपन से, और अब उसके नंबर्स भी खत्म हो गए। A Portuguese man who couldn't sleep because the noise of the stars disturbed him। स्ट्रेंज किस्म की इनको डिसेबिलिटी थी। एक पोर्चुगल से एक बंदा था जो जिसको डिस्टर्ब करती थी नॉइज ऑफ स्टार्स। अ स्लीप वॉक स्लीप वॉकिंग जो करते हैं, who got up at night to undo the things he had done while awake। एक और बंदा था जिसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वो उस वक्त जो सारे दिन को काम किए होते थे, वो सारे के सारे दोबारा खराब कर देता था रात को। एंड मेनी अदर्स विद लेस सीरियस एलिमेंट्स इलनेसेस। और भी बहुत सारे थे जिनकी अभी एलिमेंट्स, मतलब जिनकी बीमारियां अभी जरा कम सीरियस थी। इन द मिडस्ट ऑफ दैट शिपरेक डिसऑर्डर दैट मेड द अर्थ ट्रेम्बल, पेलायो एंड एलिसेंडे वर हैप्पी विद फटीग। वो ये पूरा इनके घर जो डिसऑर्डर ऐसा हुआ था कि जैसे कोई शिपरेक हुआ हो, कोई समंदर में तूफान आया हो और तबाही हुई हो, उसको देखने के लिए लोग आ रहे थे। लेकिन पेलायो एंड एलिसेंडा वर हैप्पी विद फटीग। खुश भी थे लेकिन थके हुए भी थे। फॉर इन लेस देन अ वीक दे हैड crammed gathered their rooms with money and the line of pilgrims waiting their turn to enter still reached beyond the horizon। लेकिन जो वो लोग जो अभी भी देखना चाहते थे इसको एंजल को, वो तकरीबन होराइजन, वो जगह जहाँ पे अर्थ और स्काई मीट कर रहे थे वहां पे पहुंचे हुए थे। The angel was the only one who took no part in his own act। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाकी सब कुछ ना कुछ कर रहे थे और ये एंजल वाहिद था जिसके पास करने को कुछ भी नहीं था। He spent his time trying to get comfortable in his borrowed nest। तो क्योंकि जो उसको नेस्ट मिला हुआ था, कूप मिला हुआ था, वो वहीं पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। बेफडरल्ड, कंफ्यूज्ड बाय द हेलिश हीट ऑफ द ऑयल लैंप्स। जहाँ पे लोगों ने आके ये डिफरेंट किस्म के, वो जैसे मज़ारों पे नहीं जाते, जाके कोई ताला लगा आता है, कोई धागे बांध आता है, डिफरेंट लोगों के होते हैं। तो बिल्कुल ऑयल लैंप्स की लोगों ने जलाना शुरू कर दिए थे इस एंजल के पास आके। एंड सैक्रामेंटल, सैक्रामेंटल इज रिलेटेड टू रिलीजन, रिलीजियस सेरेमनी कोई ऐसे जो ये कैंडल्स दैट हैड बीन प्लेस्ड अलोंग द वायर। तो वो बिल्कुल एक ऐसा जैसे मिजार का सा मंजर पेश कर रहा, और दिए शिए लगाना शुरू कर दिए थे। एट फर्स्ट दे ट्राई टू मेक हिम ईट सम मॉथ बॉल्स। ठीक है, ये मॉथ बॉल्स होते हैं वो जो कपड़ों में नहीं आप रखते, नेफ्थलीन बॉल्स उन्हें कहते हैं, क्या उसे कहते हैं लोग, फिनाइल की गोलियां। तो उन्होंने वो खिलाने की कोशिश की, विच अकॉर्डिंग टू द विजडम ऑफ द वाइस नेबर वुमन वर द फूड प्रिस्क्राइब्ड फॉर एंजल्स। क्योंकि उन्हें लगा कि क्योंकि उन खातून ने कहा था कि इसको ना आप मॉथ बॉल्स खिलाएं, यही एंजल्स खाते, ठीक है। बट ही टर्न्ड देम डाउन, उसने तो वो रिजेक्ट कर दिया। जस्ट एज ही टर्न डाउन द पेपल लंचेस, जो पेपल लंचेस आर दोस lunches sent by the Pope, that the penitents are those people who show repentance, ठीक है, जो माफी मांगना चाहते हैं। brought him and they never found out whether it was because he was an angel or because he was an old man that in the end ate nothing but eggplant mush। तो उनमें से वो सारी चीजें जो इसको भेजी जाती थी वो सब की सब ज़ाया हो जाती थी, क्योंकि वो और कुछ भी नहीं खाता था सिवाय इसके, ये जो बैंगन के बैंगन का भुर्ता टाइप उसकी जो मतलब बैंगन को मैश करते हैं, ठीक है। his only supernatural virtue seemed to be patience। लेकिन एक बात जो उसके अंदर थी, उसकी unending patience थी। Especially during the first days when the hens pecked at him, searching for the stellar parasites, stellar are related to stars, that proliferated uh, uh,
gave proliferated is to give strength in his wings, and the cripples pulled out feathers to touch their defective parts with, and even the most merciful threw stones at him, trying to get him to rise so that they could see him standing. तो हुआ क्या कि हैंस तो बेचारे को ठूंगे मारती थी, अपनी चोंचे मारती थी, जैसे कि अगर उसके अंदर कोई विंग्स के अंदर कोई पैरासाइट्स हों और वो खा सकें, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो क्रिपल्स थे, जो मतलब माज़ूर लोग थे, वो क्या करते थे, इधर से फेदर्स तोड़ते थे इसके बॉडी पे से, ठीक है? और जो ज़रा लोग जिनमें ज़रा हमदर्दी थी, जो इनको इसको वैसे नहीं तकलीफ देते थे, इसके ऊपर स्टोन्स फेंकते थे, ताकि उसको देखें कि ये चलता कैसे है। The only time they succeeded in arousing him was when they burned his side with an iron for branding tears, ठीक है? ये एक टिपिकल जैसे गाय भैंसों पे, जानवरों पे लगा दिए जाते हैं, नंबर्स लगा दिए जाते हैं, तो इसी तरीके से इसके ऊपर भी इन्होंने आयरन से ब्रांड करने के लिए वो लगाए नंबर्स, ठीक है? और अ, उस वक़्त ये बेचारा उठा, फॉर ही हैड बीन मोशनलेस फॉर सो मेनी आवर्स, उसके इतनी देर वो मूव ही नहीं किया था, दैट दे थॉट ही वाज़ डेड, और वो इसलिए लगाया कि शायद ये मर गया, तो इसको ज़रा चेक करते हैं। यानी अगर वो सचमुच डेड हो जाता, तो आप देखें कि उसके अंदर उनके अंदर इतनी भी रहम, सिंपैथी नहीं थी। He awoke with a start, ranting is complaining in his hermetic language, strange language, and with tears in his eyes. जी रियाज? नहीं, नहीं। मैं आपसे सॉरी करने आया था कि से जो मार गए, सर मैं सारे चीजें नहीं, नहीं, और बिल्कुल, बिल्कुल, कल को फिर हाँ जी। कल कोई ऐसी कोई बात हो, ये चीज़ कहेंगे कि ये रियाज़ ने किया। हाय अल्लाह! नहीं नहीं, मैंने कहा मैम आपकी चीज़ों में अगर चला गया तो रूबी की गाड़ी में नहीं चीज़ें चली जाती। यही समझिए, मैं क्या इनकी ये पहल है। अब मैं तो उतना पढ़ा लिखा तो नहीं, पढ़ा ना नहीं, नहीं, मुझे कैसे क्यों सॉरी कर रहे हैं रियाज? मुझे तो कुछ भी नहीं, मुझे हम सबको यही बुरा लगा था कि उन्होंने ये कहा कि चोर पकड़ लिया। हाँ, आपको हाँ जी, नहीं, 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 आप हमारे भाइयों की तरह, ऐसी कोई बात। अब दुआ करें अल्लाह बेहतर करे। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू रियाज़, बेफ़िक्र रहें, कोई मेरे दिल में आपके लिए किस बात की कहानी? हाँ। बाजी पता है क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़िए। मैं तो मेरा तो लैपटॉप ही आपके हवाले होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही है। बिल्कुल, बिल्कुल, इज़्ज़त नहीं है। बिल्कुल, और मुझे इनकी बात मुझे अच्छी नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नहीं, नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। बस, सॉरी गर्ल्स। अब मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ क्योंकि मैं वो बात करते-करते वो बंदा बेचारा आ गया था, जिसका कोई बेचारे का कसूर भी नहीं। खैर, हम क्या कह सकते हैं? हर एक की अपनी, अब इधर भी तो आप देखें ना कि अपने-अपने अ, सबके हैं व्यूज़, ठीक है? और बात करने का तरीका। अच्छा जी। सो हम थे किधर? 1 मिनट। अच्छा जी। Ranting in his hermetic language and with tears in his eyes, उसकी आँखों में आंसू थे, and he flapped his wings a couple of times which brought on a whirlwind, एक पूरा टॉर्नेडो सा आ गया of chicken dung, सारा जो उनकी मतलब एक्सक्रीशन है, वो वाली फीसेस जो एक्सक्रीट होती हैं, वो वाली फीसेस नहीं जो आप उनको देते हैं ज़रीफ साहब और उनकी कंपनी को, एंड लूनर डस्ट, और जो इसके ऊपर
lunar is related to the moon. And a gale of panic, a gale is a pleasant breeze of panic that did not seem to be of this world. लेकिन उसके अंदर से अब लगा, ये आप उसके ये जो मैजिकल रियलिज्म है उसमें आप डाल सकते हैं कि ठीक है, ना सिर्फ उसके वो थे विंग्स थे, बल्कि उसके जब वह लूनर डस्ट उसके अंदर से निकली और गेला दैट डिड नॉट सीम टू बी ऑफ दिस वर्ल्ड, कुछ अ, हल्की सी ऐसी फीलिंग आई कि ये इस दुनिया का नहीं है। ऑल्दो मेनी थॉट दैट हिज रिएक्शन हैड नॉट बीन वन ऑफ रेज, बहुत सारे लोगों को लगा कि इसको गुस्सा नहीं चढ़ा, रेज इज एक्सट्रीम एंगर, बट ऑफ पेन। From then on, they were careful not to annoy him because the majority understood that his passivity was not that of her taking his ease, but that of a cataclysm in repose. Cataclysm is disturbance, तबाही इन रिपोज, रेस्ट, ठीक है। उन्होंने रियलाइज किया कि वो पैसिव इस वजह से नहीं है कि वो कि सुकून में है तो पैसिव है, बल्कि वो इस वजह से है कि किसी भी वक्त अगर इसको आप कहेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। फादर गोजागो हेल्ड बैक द क्राउड्स फ्रिवलिटी, frivolity is enjoyment with formulas of maid servant inspiration while awaiting the arrival of a final judgment on the nature of the captive. तो वो क्राउड्स को डिस्करेज करते रहे फादर गोंजागो इसके से एंजॉयमेंट से, ठीक है। तो लेकिन वो कहते हैं कि जी अभी आ जाएगा, थोड़ा खौफ करो खुदा का। बट द मेल फ्रॉम रोम शोड नो सेंस ऑफ अर्जेंसी, लेकिन वो जो पोप है उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। दे स्पेंट देयर टाइम फाइंडिंग आउट इफ द प्रिजनर हैड अ नेवल, नेवल होता है जो मतलब जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड जिधर जुड़ा होता है, नाफ जिसे कहते हैं। इफ हिज डायलेक्ट हैड एनी कनेक्शन विद अरामिक, लोगों ने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि इसकी लैंग्वेज क्या है। हाउ मेनी टाइम्स ही कुड फिट ऑन द हेड ऑफ अ पेन, और वो पेन के ऊपर कितनी देर वो खड़ा हो सकता है, और वेदर ही वाजंट जस्ट अ नॉर्वेजियन विद विंग्स, या फिर नॉर्वे से आया है, क्योंकि नॉर्वे बहुत अरसे तक सारी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करता रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा ही कॉन्करर आ गया हो, सिर्फ इसके विंग्स हो। These meager, petty letters might have come and gone until the end of time if a providential event had not put an end, and नहीं है, an end to the priest's tribulations, disturbances। तो हो सकता है कि ये बहुत सारे लेटर्स आते जाते रहते अनलेस के ये वाक्या ना हुआ, ठीक है। एक बड़ा ही प्रोविडेंशियल बाय प्रोविडेंस, खुदा की तरफ से ये वाक्या। It so happened that during those days, among so many other carnival attractions, there arrived in the town the traveling show of the woman who had been changed into a spider for having disobeyed her parents. हुआ ये कि एक खातून जिसने अपनी बात नहीं अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी थी, वो उसकी शक्ल बदल गई थी स्पाइडर, ठीक है। तो वो खातून तशरीफ लाई, मतलब खुद भी वो ज़ाहिर है कार्निवल के साथ ही आई थी। द एडमिशन टू सी हर वाज़ नॉट ओनली लेस देन द एडमिशन टू सी द एंजल, तो उसको बिठा दिया गया। जैसे टिपिकल होता है कि आप एक बड़ी अट्रैक्शन के साथ छोटी अट्रैक्शन कर दें कि जो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो वाली देख ले अट्रैक्शन। But people were allowed to ask her all manner of questions about her absurd, strange state and to examine her up and down so that no one would ever doubt the truth of her horror. तो लोगों ने मतलब उससे क्वेश्चन किए कि क्या सचमुच ऐसे हुआ था कि तुमने बात नहीं मानी थी। She was a frightful tarantula spider the size of a ram, वो इतनी बड़ी थी कि जितना बड़ा एक ह्यूज बकरा होता है, एंड विद द हेड ऑफ अ सैड मेडन, लेकिन उसका सर जो है वो एक सैड औरत वाला था। What was most heartrending, touching, however, was not her outlandish shape, but the sincere affliction, torture with which she recounted the details of her misfortune.
जो वो अपनी सबसे ज्यादा तकलीफ तो ये बात थी कि जिस तरीके से वो अपनी तकलीफ को बताती थी. While still practically a child, she had sneaked out of her parents' house to go to a dance. वो अपने डांस के लिए निकल गई अपने पेरेंट्स को बताए बगैर. And while she was coming back through the woods after having danced all night without permission, a fearful thunderclap rent the sky in two. Two, ये टाउ नहीं है, two है. And through the crack came the lightning bolt of brimstone that changed her into a spider. वो पूरा क्योंकि उसने रात को पूरी रात डांस किया विदाउट परमिशन ऑफ हर पेरेंट्स, तो वो इस वजह से उसने ये एक थंडर क्लैप हुआ, लाइट आई और फिर वो स्पाइडर में बदल गई. Her only nourishment came from the meatballs that charitable souls chose to toss into her mouth. सिर्फ वो मीट बॉल्स कोफ्ते खाती थी जो कि लोग नेक लोग इसको फेंक देते थे. A spectacle site like that, SIDHT site, full of so much human truth and with such a fearful lesson, was bound to defeat without even trying that of a arrogant angel who's scarcely designed to look at mortals. Deigned, deigned is tried. ठीक है, वो तो अभी mortals की तरफ देखता भी नहीं था. Besides the few miracles attributed to the angel, showed a certain mental disorder like the blind man who didn't recover his sight but grew three new teeth or the paralytic लेकिन वो जो और miracles थे यहाँ पे वो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करना शुरू हो गया और उनकी अटेंशन एंजल से हट के तो और चीजों पे जाना शुरू कर दी. ठीक है. अच्छा, वो कैसे और वो क्या थी इंटरेस्टिंग चीज़ें? एक ब्लाइंड मैन था जिसको आईसाइट तो दोबारा नहीं मिली, लेकिन उसके 3 नए दाँत निकल आए. और द पैरालिटिक पैरालाइज्ड बंदा हू डिडंट गेट टू वॉक बट ऑलमोस्ट वन द लॉटरी, और उसको लॉटरी मिल गई. ठीक है. एंड द लेपर लेपर इज़ लेप्रेसी, ये स्किन डिजीज़ होती है. whose sore sprouted sunflowers, उसके वो मिरेकल ये था कि उसके जो जिस्म पे दाने निकलते थे उसमें से सनफ्लावर्स निकलना शुरू हो गए. Those consolation miracles which were more like mocking fun had already ruined the angel's reputation when the woman who had been changed into a spider finally crushed him completely. और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसी को आके देखना शुरू कर दिया, इस खातून को, और एंजल की वो टेम्पटेशन देखने की टेम्पटेशन खत्म होगी. दैट वाज हाउ फादर गोंजागो वाज क्योर्ड फॉरएवर ऑफ हिज इंसोम्निया. इंसोम्निया इज व्हेन यू कैन नॉट स्लीप. ठीक है. तो फादर गोंजागो जो इतने फिक्र में थे कि अब लोग उसकी पूजा शुरू कर देंगे तो वो उनकी परेशानी खत्म होगी क्योंकि लोगों ने उसकी तरफ उस औरत की तरफ ज्यादा टेरेंचुला वुमन को देखना शुरू कर दिया. ठीक है. And Pelayo's courtyard went back to being as empty as during the time it had rained for 3 days and crabs walked through the bedrooms. और फिर वापस और तो और लोगों ने अब बिल्कुल ही उसके घर आना ही पिलायो के घर छोड़ दिया. The owners of the house had no reason to lament, complain. उनके पास कोई शिकायत करने का रीजन ही नहीं था. With the money they saved, they built a two-story mansion, कोठी, with balconies and gardens and high netting so that crabs wouldn't get in during the winter. तो उन्होंने क्या किया कि ऊंची सी फेंस भी लगा दी अपनी हवेली के इर्द गिर्द. ठीक है. ताकि क्रैब्स उधर मत आए. And with iron bars on the window so that the angels wouldn't get in. और फिर angels भी ना आए. Pelayo also set up a rabbit warren close to town and have up his job as a bailiff for good. और तो और इनकी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस भी और सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव हो गया. उसने ना सिर्फ रैबिट्स का पूरा एक बिजनेस स्टार्ट किया बल्कि बेलिफ का काम भी शुरू कर दिया. एंड एलिसेंडा bought some satin pumps with high heels and many dresses of iridescent, glowing silk, the kind worn on Sunday by the most desirable women in those times. और उस टाइम की जो सबसे ज्यादा खवातीन फैशनेबल थी, उसी तरीके से उसने अपनी ड्रेसिंग करना शुरू कर दी. The chicken coop was the only thing that didn't receive an
टेंशन, बाकी सब हालात बदल गए सवाए चिकन कूप के. If they had washed it down with creolin. Creolin is a disinfectant, and burned tears of myrrh. Myrrh is a natural gum, वो भी antiseptic होती है. Inside it, every so often, it was not in homage. Homage असल में होता है. Homage is to pay tribute to someone, to the angel, but to drive away the dung heap stench that still hung everyone like a ghost and was turning the new house into an old one. तो एंजल बहुत अरसे उसी कूप में रहा, और उसकी हालत सिर्फ तब बदलती थी, कूप की तब भी सफाई की जाती थी, कि एंजल की वजह से नहीं, बल्कि जब उसकी स्मेल इतनी ज्यादा हो जाती थी या गंध इतना ज्यादा हो जाता था कि वो उनके नए घर को भी पुराना बनाना शुरू कर देता था. At first, when the child learned to walk, they were careful that he not get too close to the chicken coop. तो जब ये इसने चलना सीखा बेबी ने, इन्होंने उसको चिकन कूप से दूर रखा. But they began to lose their fears and got used to the smell. And before their child got his second teeth, he'd gone inside the chicken coop to play. और तो और बच्चे ने उससे जाके चिकन से और एंजल से खेलना भी शुरू कर दिया. Where the wires were falling apart, the angel was no less standoffish, strange with him than with the other mortals. But he tolerated the most ingenuous infamies with the patience of a dog who had no illusions. वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेट की तरह ओबीडियंट सा, साइलेंट सा बैठा रहा. उस एंजल ने कोई भी डिस्टरबेंस नहीं की. दे बोथ केम डाउन इनटू द चिकन विद द चिकन पॉक्स एट द सेम टाइम. लेकिन हुआ ये कि दोनों को चिकन पॉक्स हो गए सेम टाइम पे, मतलब एंजल को भी चिकन पॉक्स हो गए और बेबी को भी चिकन पॉक्स हो गए. ठीक है. ज़ाहिर इन्फेक्शन है वो तो दोनों को ही अफेक्ट करेगी. द डॉक्टर हु टुक केयर ऑफ द चाइल्ड couldn't resist the temptation to listen to the angel's heart, and he found so much whistling in the heart and so much sounds in his kidneys that it seemed impossible for him to be alive. उसके अंदर से इतनी चाइल्ड तो बेचारा ठीक हो गया, यानी डॉक्टर उसके लिए आता था. उसी डॉक्टर ने एंजल के भी हार्ट को फ़ील करना शुरू किया, ताकि वो भी उसके अंदर कोई स्ट्रेंज चीज़ है तो वो पता चले. तो उसने कहा इसमें इतनी व्हिस्टलिंग है और किडनीज़ में इतनी आवाज़ है कि अगर कोई अंदर से खोखला हो तो वो शायद खोखला हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, तो शायद वो अलाइव भी ना होता. व्हाट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट हाउएवर वाज़ द लॉजिक ऑफ हिज विंग्स. सिर्फ वो उसके विंग्स से ज़्यादा सरप्राइज हुआ. They seemed so natural on that completely human organism that he couldn't understand why other men didn't have them too. लेकिन वो इतनी नेचुरली उसकी बॉडी के साथ अटैच थे कि उसे लगा कि बाकी ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी हो सकते हैं, उनके भी विंग्स हो सकते हैं. When the child began school, it had been some time since the sun and rain had caused the collapse of the chicken coop. तो बच्चे ने, ये टिपिकल वही वाला टाइम है कि जब मेजर किया जाता था किसी की एज को सूरज की मूवमेंट और बारिश के साथ और चांद के साथ, और ये तो उसने तब स्कूल जाना शुरू किया जब सन और रेन जो है वो उसने चिकन को तबाह कर दिया. द एंजल वेंट ड्रैगिंग पुलिंग हिमसेल्फ अबाउट हियर एंड देयर लाइक अ स्ट्रे डाइंग मैन. उस एंजल ने जैसे कोई इधर-उधर फिर रहा होता है बंदा, उसने यानी इतनी ताकत आ गई कि उस एंजल ने अपने आप को घसीटना शुरू कर दिया. दे वुड ड्राइव हिम आउट ऑफ द बेडरूम विद अ ब्रूम, और तो और वो इनके कमरों में आ जाता था. उसको ब्रूम से मारते थे, के निकाल देते थे. एंड अ मोमेंट लेटर find him in the kitchen. They used to find him in the kitchen. He seemed to be in so many places at the same time that they grew to think that he had been duplicated. वो इतनी जगहों पे पाया जाता था, इतनी स्पीड से पाया जाता था कि ऐसे लगा कि शायद वो डबल हो गया. That he was reproducing himself all through the house, and the exasperated and unhinged Elisenda shouted that it was awful living in that hell full of angels. तो आहिस्ता आहिस्ता एलिजेंडर ने कहना शुरू कर दिया कि इतने ये पूरी हेल बन गई है जहाँ पे हर जगह एंजल्स ही एंजल्स हैं. अगेन this shows the this is very ironic कि एंजल्स तो ऑब्वियसली पैराडाइज में हो सकते हैं,
hell में नहीं हो सकते. He could scarcely eat, and his antiquarian eyes had also become so foggy that he went about bumping into posts. वो कभी इधर से टकराता था, कभी उधर से. All he had left were the bare cannulae of his last feathers. सिर्फ वो जो feathers के नीचे यूं लंबी सी स्टिक सी होती है, सिर्फ वो रह गया था. Pelayo threw a blanket over him and extended him the charity of letting him sleep in the shed. And only then did they notice that he had a temperature at night and was delirious, unconscious, with the tongue twisters of an old Norwegian. उस दिन उन्होंने realize किया कि ये Norwegian language बोलता है और वो भी tongue twisters बोल रहा है. That was one of the few times they became alarmed, for they thought he was going to die, and not even the wise labor woman had been able to tell them what to do with dead angels. और उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि अगर ये मर गया तो हमने इसके साथ क्या करना है. And yet he not only survived his worst winter but seemed improved with the first sunny days. Spring में उसने improve करना शुरू कर दिया. He remained motionless for several days in the farthest corner of the courtyard. ठीक है, वो कोने में सहन में बैठा रहता था, where no one would see him. And at the beginning of December, some large stiff feathers began to grow on his wings. और दिसंबर में तो ये हुआ कि उसके विंग्स पे उसके बॉडी पे नए feathers आना शुरू हो गए. The feathers of a scarecrow, which looked more like another misfortune of decrepitude, uh, decrepitude, मतलब being disabled. ऐसे लग रहा था कि ये फर्दर उसकी स्ट्रेंजनेस में इजाफा हो रहा था. बट he must have known the reason of for those changes, for he was quite careful that no one should notice them, that no one should hear the sea chanties that he sometimes sang under the stars. लेकिन अब उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ रही थी, लेकिन और वो बोलना भी शुरू कर देता था. लेकिन वो चाहता था कि ये चीजें उसका बोलना किसी को भी ना पता चले. ठीक है. One morning, Alessandra was cutting some bunches of onions for lunch when a wind that seemed to come from the high seas blew into the kitchen. एक दिन वो अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, अनियंस की काट रही थी, जब एक विंड आई. ठीक है. Then she went to the window and caught the angel in his first attempts at flight. She went to the window to see what was happening. She saw that the angel was about to fly. They were so clumsy. Clumsy is not measured. That his fingernails opened a furrow in the vegetable patch. क्यारी सी बन गई थी एक वेजिटेबल पैच में. And he was on the point of knocking the shed down with the ungainly flapping that slipped on the light and couldn't get a grip on the air. Because he was making an effort to fly. तो इस दौरान ये अपनी जो एलिफेंडा है उसने देखा कि वो जो ये जो शेड है वो भी तकरीबन गिरने वाला था जिधर ये बैठा हुआ था. But he did manage to gain altitude height. उसने फिर भी कोशिश की कि वो ऊपर जाए. Alessandra let out a sigh of relief for him, herself, and for him when she watched him pass over the last houses. And at once, what happened that he started to go upwards towards the sky, and she was relieved to get rid of him. ठीक है, ये कोई नहीं था कि कोई बेचारी परेशान हो रही थी कि पेट था या कोई ऐसा जिसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट थी. ठीक है. When she watched him pass over the last houses, holding himself up in some way with the risky flapping of a senile vulture. और बिल्कुल वो देखती रही जब तक कि वो दूर तक चला नहीं गया. इस वक्त वो क्या लग रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बहुत बूढ़ा सा वल्चर, एक गिद्ध है जो कि फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है. She kept watching him even when she was through cutting the onions, and she kept on watching until it was no longer possible for her to see him. और फिर वो उसे देखती रही जब तक कि वो दूर नहीं चला गया. Because then he was no longer an annoyance in her life. अब वो कोई disturb नहीं कर रहा था, but an imaginary dot on the horizon of the sea. एक imaginary dot था पूरे sea के पास.
नाउ गर्ल्स, बेसिकली यहाँ पे आपको जो एंजल है, ही इज ही इज द सिंबल ऑफ रिलीजन, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है इसमें, वो रिलीजन का है। और द वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस विंग्स, इसका टाइटल ही आपको बता देता है कि ये जो रिलीजन है, हम उसको एक चीज तो सुपरनेचुरल सी समझते हैं, हाउ एवर वी यूज रिलीजन और पर्सनल गेन्स ओनली, ठीक है। कोई ज़्यादा हम उसको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि गेन्स के लिए यूज़ करते हैं। उसको हम यूज़ करते हैं ताकि लोग हमारी बातें सुनें, त त हमारी एक स्टैंडिंग हो कि हम भी रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं। हम उससे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन रिलिजन को से जब जान छूट जाती है, जब वो भाग जाता है, रिलिजन को जब हमारे ऊपर से खत्म हो जाती हैं वो सारी की सारी जो क्या कहना चाहिए, पाबंदियाँ, तो फिर हम खुश हो जाते हैं। सो दिस स्टोरी इज़ बेसिकली अबाउट जो इसमें सबसे बड़ा जो आपका सिंबलिज़्म चल रहा है वो है रिलिजन का, ठीक है? गर्ल्स, इसका मैं एनालिसिस आपको कल इंशाल्लाह भेज दूँगी।